Following our last class, we were discussing that what are some of the important factors that we should consider while we are working with the performance of the computer system. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनसे हमारे कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर जो है वो एक फर्क पड़ता है। जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से कोर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सो वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट। So first of all, that the performance of a CPU basically refers to how much faster your computer can process an instruction. Because the more the faster it can process instructions, the faster your task will be completed. It is important because if instructions can be processed in seconds, that means your computer have a very high performance, and users might want a high computer speed so that they just don't be frustrated and waiting for their computer to work on. So for this example, I have three main important factors that should be considered. In the last class, we also discussed that the first component is cores, the second component is clock speed, and the third component is cache. So basically, if it is single cores or cores, that means that it is basically a part of the central processing unit that contains all the components that is used to perform the fetch, decode, execute cycle. Like I discussed in the last class, that if you are increasing the number of cores, that means that you are increasing your power to process more number of fetch, decode, and execute cycle. And if you are increasing your power to do that, that means that your instruction will be processed faster. So for example, if a computer system has one core, it means that it can perform only one fetch, decode, execute cycle at a time. However, if a CPU has two cores, that means that it is an example of a dual core processor. That means at the same time, it can work twice. And as the same, like if I have the computer system with four cores, that means that this is a quad core processor and it can process up to four fetch, decode, execute instructions at the time. I discussed to you in the last class regarding fetch, decode, execute cycle, that how it really happens, what are the processes in fetch cycle, what are the processes in decode cycle and execute cycle. So it's really simple. Like for example, if you have uh, a single employee working into your organization or company and you just gave him a task, so he would might take longer to complete that. But similarly, if you just gave that task to a team or a number of people, you could see that its efficiency is increased. You can see that its performance is increased, its speed is increased. Like, so that is the main criteria, that if you have a more number of processors or more number of cores, that means that your computer can work much faster. So what is the basic definition for core? The basic definition is that the core is the part of the central processing unit that contains all the components that are used to perform fetch, decode, execute cycle. That means that if it has a one CPU, it has those six registers. But if you have more number of cores, that means you have more amount of registers, and so as you can perform your task. Multiple computers allow a computer to multitask, and if you can process more than one instruction at a time, so your computer will speed up. Similarly, just after the concept of cores, the CPU also contains an internal clock as well. Now, what is this internal clock? This internal clock is the one that is responsible for controlling the speed at which instructions are processed. The speed is basically measured in hertz. Like you have often seen, like the speed of your computer systems, like how much faster your computer system is. It is mostly measured in the form of hertz, like gigahertz, megahertz, like this. A CPU that has a clock speed of 1 hertz, it's able to process one instruction per second. If I have one CPU that has a clock speed of 1 hertz, it is able to process one instruction per second. However, if your CPU had a clock speed of 1 hertz, you to be rather waiting for other tasks to be completed. Because 1 hertz is like you can only perform one instruction per second, and whenever you are working with your computer, you are basically performing millions of instructions per second. So this is the reason that if you have a lower amount of speed that is measured in this unit hertz or megahertz, so this is why it's slow. So most modern computers have a clock speed that is measured in gigahertz.
So it's basically like byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. The smallest unit is hertz, and the higher amount of unit is gigahertz. So a CPU with a clock speed of 2 gigahertz can process up to 2 billion instructions per second. That is definitely a very faster computer system that can perform 2 billion computer systems as well, right? Like for example, if I give you the example of that, as you can see in my task manager, right here I have the usage of my CPU, and when I click on this CPU or I go into the performance tab, you can see the speed of my CPU it is currently working up to. It says that my processor starting speed is 1.60 gigahertz, and it is going up to 3.37 gigahertz. So if my processor is showing me this speed, that means that my processor can perform up to 3.5 billion instructions per second. So this is why this is known as an internal clock of your computer system that is responsible for maintaining the speed. So what is a clock speed? A clock speed is the number of fetch decode execute cycles that can be performed in a second. So if you have a 1 hertz machine, that means you can only perform one clock cycle or one fetch decode execute cycle per second. But if you have 2 gigahertz processor, that means that you can perform 2 million fetch decode execute cycles per second. Is it making sense? Is it clear to both of you? Yes, sir. Yes, sir. Then I have the third area of the computer system that is known as cache memory. So a CPU also contains a cache memory as well, and that cache is a type of data storage within a central processing unit. That means that this is a part of your CPU, and here instructions and data that the computer uses are mostly stored in this cache. So that means that the CPU does not have to fetch data from the CPU every time that instruction is being processed. So he just can take the information or the data from the cache memory. So it is going to help you reduce time and your work will be faster. So for example, if it's a question like what is a cache, you can say that a cache is a type of data storage within your CPU. Instructions and data that the computer uses most can be stored in this cache. That means that the CPU does not have to fetch data every time. He can just take your data from the cache memory. A cache memory basically stores your temporary information. So a cache is a type of storage that is built into the central processing unit to store the most frequently used data and instructions. So if you are using your most frequency data and instructions, that means that you do not have to like load the data all over again and like go through the whole process of the registers. If it is stored in the cache, it's like a shorter way. Your computer can just receive the instructions from there. Like, for example, if I say that we are going to have our computer class from 6 till 7. So 6 till 7 is the time, and the address is going to be the Zoom link. And what is going to be the action that is going to be performed? The action is going to be performed that I'm going to take a class. Similarly, if I just say that from 6 to 7, I'm going to conduct a test on Zoom. So that means that my location of the test to be conducted is Zoom, and my action that has to be performed is the conduction of this test. So here I have two important things. One is the action that has to be performed, and one is the address that from where it is going to be performed. So instruction set basically has two important areas, as you can see on your screen. On your left hand side, you have the opcode. On your right hand side, you have your operand. So what is your opcode? Your opcode is the action that you have to perform
right? Like either if it is like moving the instructions, either if it is like uh, storing them, transferring them, subtracting them, adding them, multiplying them. So this is your opcode. Your opcode is going to be the action, and your operand is going to be the address that has to be followed, right? So on the right hand side you can see a table of instruction set. However, right now this is not included in your syllabus, as this will you will be studying this in AS levels, like you have LDM, LDD, LDI. These are some examples of actions that you have to perform. For example, I have MOV means move. Like move what? Move that specific instruction set or address. So this is your instruction set. Instruction set in easy words means a set of given instructions that I'm giving to you. For example, if I gave you a paper and I asked you to complete the assessment, so I'm going to give you some sort of instructions onto that. On the instructions are going to be that what is going to be your time limit. I'm going to say that no calculators are allowed. You need to use a pen. You need to do it this way. So this is how an instruction set works. I basically provide you with some examples of your instructions, and you follow them. Similarly, in computer system, what is an instruction set? An instruction set is a list of all the commands that can be processed by a CPU, and the commands are machine codes. How is possible that the commands are machine code? Because machine codes are always in binary, and the computer only understands the language of binary. तो इंस्ट्रक्शन सेट आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है, वो इंस्ट्रक्शंस के कमांड होते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। और इंस्ट्रक्शन सेट की आपके पास चार कैटेगरीज होती हैं। अगर डेटा को मूव करना है, अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर कोई कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, या अगर कोई इनपुट या आउटपुट लेना है। डाटा मूवमेंट का मकसद ये है कि आप डाटा ए से बी में मूव करा रहे हो, बी से ए में करा रहे हो। अर्थमेटिक मीन्स कि आप कोई भी इसमें कैलकुलेशन करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल multiplication, subtraction, something like that. Here you have conditional instructions as well. Conditional instructions means that if like this is greater than that, like you are giving some conditions. इनपुट एंड आउटपुट मीन्स ये आपका कोई भी इनपुट या आउटपुट आपकी डिवाइस के साथ आपका फंक्शन जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शन सेट्स आर सिंपल. It is a set of list and instructions and commands that the computer system should must follow, and these are in machine codes. Machine codes means binary. They consist of opcode and operand. Do you have any problems in instruction set? No, sir. No, sir. अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स. So, can anyone of you give me an idea that what are embedded systems? Embedded system क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? Sir, it is a microprocessor based computer system. For example, For example, uh, Sir, calculator. yes, excellent. Calculator is an example. But can you justify your answer? Why is calculator an embedded system? अच्छा, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, मशीन हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, सबके अंदर एक चीज कॉमन है. Or you can say that it is even common in embedded systems. So even if you have a question in paper that what is an embedded system, the first thing you are going to write that embedded system is a combination of hardware and software. Now, hardware and software both have a relation that they cannot work without each other. For example,
if I just gave you a computer system machine, you have the RAM, ROM, hard disk drive, CPU, and all of that. You have the complete hardware, but you do not have the appropriate software to work with it. You कैन नॉट वर्क. अगर आपके पास विंडोज नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपके पास मोबाइल फोन मौजूद है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, आपके पास एप्पल का iOS नहीं है, तो काम नहीं करेगी कोई भी आपके पास डिवाइस. तो चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन हो, आपका एयर कंडीशन हो, वॉशिंग मशीन हो, आपका फ्रिज हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका टीवी हो, अगर वो सिंपल एक हार्डवेयर है तो इट्स समथिंग लाइक जिसका कोई इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपके साथ उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल रहा है, वो इंस्टॉल्ड है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो. एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल आप अपनी गाड़ियों में भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल वी हैव टेस्ला कार्स एज वेल, जिसमें आपके पास ऑटो ड्राइव का भी फीचर होता है. तो एम्बेडेड सिस्टम का पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर आप अपने टास्क को स्पेसिफिकली कैरी आउट कर सकते हो. अब टास्क आपका कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको किसी को मैसेज करना है तो आप अपना मोबाइल यूज करोगे. जब आपका ये टास्क है आपको एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप अपनी गाड़ी यूज करोगे. अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आपका कोई और, आपको फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो, इफ यू वांट टू वॉश द क्लोथ्स देन वी हैव एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एज वेल. So these are basically some of the examples that are used to carry out these sort of tasks and operations. So whenever you have an embedded system, that means that you are going to work with three important areas. The first area, I mean, तीन चीजें अहम होंगी embedded system के अंदर. पहली चीज होगा आपका माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, और तीसरा होगा आपका सिस्टम ऑन चिप्स. तो अगर आपके पास वो माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम होता है? दिस हैज अ सीपीयू इन एडिशन टू रैम एंड रोम and other input and output devices all embedded into a single chip. They carry out a specific task. माइक्रो कंट्रोलर का काम ये होता है कि रैम, रोम और सीपीयू के साथ ये सारी इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो टास्क होते हैं, वो एक ही चिप के अंदर इंस्टॉल होते हैं. दैट कैन बी यूज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क. जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रो चिप्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. लेकिन फर्क सिर्फ इतना माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, के माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ उनको कंट्रोल करेगा, उनको प्रोसेस नहीं करेगा. प्रोसेस करने का काम होगा माइक्रो प्रोसेसर का, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो हर कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है. लेकिन इसमें जो है हमें किसी भी रैम, रोम या इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत नहीं है. इट्स इनफ फॉर इटसेल्फ. द लास्ट एरिया सिस्टम ऑन चिप्स. सो दिस में कंटेन अ माइक्रो कंट्रोलर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट. They almost always will include CPU, memory, input and output storage. तो आपके पास लास्ट होता है सिस्टम ऑन चिप्स. तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिससे आप अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो. और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं. माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिस्टम इन चिप्स होता है. अब एम्बेडेड सिस्टम चाहे कोई भी हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, डिवाइस हो, कैलकुलेटर हो, हमेशा से इसके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी. सबसे पहले आपके पास होगा एक यूजर इंटरफेस. अब राइट नाउ एट दिस पॉइंट you can think of any embedded device that is in your home, or you can take it into your mind. Like for example, आप गाड़ी अपने जहन में ले आओ, कैलकुलेटर अपने जहन में ले आओ, मोबाइल ले आओ, माइक्रोवेव ओवन ले आओ, कोई भी चीज ले आओ, तो ये सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी. सबसे पहले उसके पास होता है यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस का काम ये होता है कि यूजर आपका इंटरैक्ट कैसे कर रहा है. चाहे वो वॉइस रिकग्निशन से कर रहा है, वो किसी डिवाइस से कर रहा है, वो टाइप करके कर रहा है, वो माउस के थ्रू कर रहा है, किस तरह से कर रहा है. अगर वो गाड़ी है तो वो आपके पास स्टीयरिंग है, उसके यूजर इंटरफेस के लिए आपके पास उसका टच स्क्रीन भी हो सकता है, या आपके पास वॉइस रिकॉग्निशन भी हो सकती है. सेकेंड थिंग इज दैट यू ऑलवेज हैव एन एनालॉग और डिजिटल इनपुट. जब तक आप किसी भी डिवाइस को इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट जनरेट कैसे होगा? और आउटपुट जनरेट कहाँ से होगा? आपके डिवाइस से होगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का. सो दे आर फीडबैक ओरिएंटेड सिस्टम्स एज वेल. इसके बाद आपके पास ये है कि एम्बेडेड सिस्टम कैन कंटेन सेंसर इनपुट्स. सेंसर इनपुट्स मींस कि आपकी वॉइस रिकग्निशन हो गई, आपने स्वैप कर दिया, सो दे हैव सेंसर इनपुट्स एज वेल. And some of the latest embedded systems are very powerful as they contain the dual core and the quad core CPUs as well. But the point is that what is the advantages and disadvantages of an embedded system that are right in front of you? So
Can you all just define me some of the benefits and drawbacks that are right onto the screen one by one? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी फिट इनटू एनी डिवाइस, मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ओवन हो। दूसरा ये है कि दूसरे सिस्टम से बनाने के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट है, चीप है। एक और पॉइंट ये है कि वो सिर्फ एक ही टास्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं और उनको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हो सकती है। इट मीन्स कि अगर मोबाइल है तो वो आपके पास किसी एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कॉल कर रहे हैं आप, मैसेज कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन से आप सिर्फ कपड़े ही धो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वॉशिंग मशीन से आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन के थ्रू आप गाड़ी जो है वो आप ड्राइव करके जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो दैट कैन ओनली बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आप कभी भी किसी भी गाड़ी से कपड़े नहीं धो सकते, दैट्स नॉनसेंस। सो एम्बेडेड सिस्टम ओनली हैव वन डेडिकेटेड टास्क फॉर विच इट इज क्रिएटेड ऑन, they consume a very little power, they can be controlled, like for example a mobile phone, they have a very fast reaction, and with mass production comes reliability। mass production means कि जब एक ही प्रोडक्ट को वो बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे एक लार्जर स्केल पे तो आपके पास रिलायबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ये है कि आप अपनी डिवाइस को अपग्रेड नहीं कर सकते। मेरे पास अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है तो मैं उस एंड्रॉयड के फ़ोन को कभी भी आईफोन नहीं बना सकता। मेरे पास जो एंड्रॉयड का फ़ोन है मैं उसके नए मॉडल पे भी उसको कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकता। मेरे पास एक लिमिट है, सॉफ्टवेयर की अपग्रेड्स आती हैं लेकिन कभी भी मैं उसका हार्डवेयर चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास अगर अभी कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद है और उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया है तो मैं सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसका हार्डवेयर कैसे अपडेट करूंगा मैं? आई कैन नॉट अपग्रेड द हार्डवेयर, आई कैन नॉट अपग्रेड द टच स्क्रीन, आई कैन नॉट अपग्रेड द कैमरा एज वेल। अगर आपका पास एम्बेडेड सिस्टम में कोई भी स्पेसिफिक फॉल्ट आ गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मोबाइल खराब हो गया, ओवन खराब हो गया, तो उसके लिए हमें उसके स्पेशलिस्ट टास्क के पास ही जाना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई एक ही बंदा वो सबके काम कर दे। हर मशीन के लिए अपना काम, अपना एक्सपर्ट टेक्नीशियन होता है। Although the interface can appear to be simple, however, in sometimes it can be more confusing, or sometimes you can face some of the drawbacks or some of the errors as well। कुछ bugs, कुछ errors आपके पास इन devices के अंदर आ सकते हैं। अगर device आपकी इंटरनेट से connected है तो it is always open for hacker and viruses to control them। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी चीज को रिपेयर करना होता है, उसको रिपेयर करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट बंदा नहीं मिल रहा होता, तो वी एंड अप जस्ट थ्रोइंग इट अवे और इट जस्ट बिकम्स ऑब्सोलीट। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज एज वेल। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ एम्बेडेड सिस्टम्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। मेरे पास जो अभी मोबाइल फोन है वो अगले 10 साल नहीं चल सकता। 5 या 6 साल बाद मैं उसको कितना इस्तेमाल करूंगा, मतलब मैं मेरे घर में जो है वो फिर मेरे बच्चों के पास आ जाएगा, वो इस्तेमाल करेंगे, फिर उनसे भी टूट जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि एक ही उसको मैं अपनी दराज में रख दूंगा जिसमें मेरे पिछले 20 साल के मोबाइल फोन्स पड़े हुए। So the point is that technology is rapidly upgrading itself. And the last point is the same, that if there is an increase in the thrown away devices that are being discarded, so they become suddenly outdated. Like the mobile phone, the laptop, the technology that you used to use like 5 years or 10 years before, you won't be having right now because you are having changes into that। So this is basically an embedded systems, like this is a car example। गाड़ी के एग्जांपल में गाड़ी का जीपीएस सिस्टम है, एयर बैग्स है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, एबीएस ब्रेक्स हैं। ये सब आपके पास एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी सर्वेलेंस में कैमराज हो गए, सेंसर्स हो गए, अलार्म हो गए जो हमारे पास गाड़ियों में लगे हुए होते हैं या रोड्स पे लगे हुए होते हैं। लाइटनिंग सिस्टम भी आपके पास एम्बेडेड सिस्टम है, ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाती हैं घरों की, रोडों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। So this is it for your last part। So 4 and 5 title you can read out yourself and just notify me if you have any problems in this। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं sir। तो यहाँ पे हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है 3.2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये काफ़ी आसान टॉपिक है। इसमें मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज है यार कीबोर्ड और माउस के। तो